My dear students, welcome to this new course of Functional English. Functional English and Applied Grammar. Please make a comment. Today I will learn about Functional English and Applied Grammar. Today I will learn Functional English and Applied Grammar. Please make a comment so that I can see your comments. Today I will learn Functional English and Applied Grammar. Now here you see that we have Functional English. So the word is functional. Functional is adjective. Functional, it is adjective. While functional, it is adjective. While function, that is noun. So please make a comment. Today I will learn Functional English and Applied Grammar, and also please share the link in safe WhatsApp groups. So here we have functional and function. I say function is noun, functional is adjective. Why? Because adjective, that is for noun. Adjective is for noun. English is noun. The word English is noun. Functional, that is adjective. Functional. What is the function of grammar? So here the word function, that is noun. This is a functional English class. So here functional, that is adjective. So from today onward, as we are doing applied grammar also, so whenever you see a word, each word is one of the part of speech. Part of speech. So you will be vigilant. Vigilant. You will be awake that what part of speech it is, what type of word it is. This will make your English 100% correct. You will be having error-free English, error-free English if you adopt this approach. Functional, function. English, noun. Functional, adjective. Function, that is noun. So I don't see your comments. There's some problem in the Facebook. Let me refresh my system. Can you make a comment that today I will learn functional English and applied grammar? Okay, I saw the first comment of someone,
Shahwani, vigilant. Vigilant means awake. So for error-free English, it is important that you should know that which word is what part of speech. Which word? Error. Farhana, error. 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 I have written in the start of the lecture some important words, and these important words are conscientiousness. Can you write these words again as comment? Conscientiousness. Conscientiousness. What other words you have? I need your doggedness. Doggedness. Single-mindedness. Single-mindedness. Conscientiousness. Doggedness, single-mindedness. What other word is there? Diligence. Diligence. These are my favorite words. I love these words. Conscientiousness means that your conscience is awake. Your conscience is awake. आपका ज़मीर जो है वो जागा हुआ है. Conscientiousness. You are dutiful. Doggedness. Doggedness means steadfastedness. Steadfasted. You are a steadfasted person. Steadfasted. Single-mindedness. Focus. Diligence, hard work. So these are some of the qualities that I would like to see in your personalities so that we can get some success stories. Conscientiousness, doggedness, single-mindedness, diligence. You can make a comment. For my success, I need the following characteristics in my personality. To get success in life, I need the following characteristics in my personality. तो कोलन लगा के इन चारों को लिखो. तो ये आपका छोटा सा पैराग्राफ बन गया. और अपने टाइम लाइन पे, अपनी फेसबुक पे और सेफ 2 जो हमारा ग्रुप है उसमें भी ये लिखे. फॉर माई सक्सेस आई नीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन माई पर्सनालिटी. अच्छा, अब ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं? बिकॉज दिस इज फंक्शनल इंग्लिश. दिस इज अप्लाइड ग्रामर. हम सिर्फ ये किताब नहीं पढ़ेंगे. ये जो किताब है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वी अप्लाई इट. हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. वी प्रोमलगेट. 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 इम्प्लीमेंट. अब हमारे आज के लेक्चर में विकेबलरी भी एक है कि भाई विकेबलरी को मैं कैसे करूंगा. सो यू हैव टू यूज इट. यूज विकेबलरी. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज प्रोमलगेटेड ऑन 23 मार्च 1956. तो आपने अंग्रेजी का एक खूबसूरत जुमला बना दिया. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान was promulgated on 23rd March 1956. Promulgate, implement, लागू करना. लागू
करना. So the first constitution of Pakistan was promulgated on 23rd March 1956. तो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, this is functional English. This is applied grammar. Now in life, there are two things which are important. One is function and the other is structure. Now function, we call it physiology, while structure, we call it morphology. Function, physiology, structure, morphology. In the world of philosophy, we call it being and becoming. Function, that is becoming. Structure, that is being. Function, physiology, structure, morphology. Structure, being. Function, becoming. तो क्या हम खाली डब्बे हैं या हमारा कोई काम भी है? तो खाली डब्बा होना जो है, स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. देयर मस्ट बी सम फंक्शन. तो ये एक बड़ी गहरी डिस्कशन है कि इंसान होना काफ़ी है या इंसान ने कुछ करना भी है. एक बंदे के बस मैं इंसान हूँ, मैं खूबसूरत लड़की हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं जो है ये हूँ वो हूँ, बस ये मेरे लिए बहुत है. सो स्ट्रक्चर इज समटाइम यूजलेस. दैट इज फ्यूटाइल. फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस, फजूल. ठीक है, एक बंदा बहुत अच्छा है लेकिन वो कुछ करता नहीं है, तो उसके होने का क्या फायदा? बीइंग का मतलब है वजूद. वजूद कुछ करता भी है या बस खाना खाता है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, बाकी उसका कोई काम भी है या नहीं है? जो काम है, फंक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज फिजियोलॉजी. स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी. कुछ कहते कि यार स्ट्रक्चर ना होता तो काम कहाँ से आएगा? तो ठीक है, स्ट्रक्चर ज़रूरी है लेकिन काम भी करे. सो ग्रामर एज अ स्ट्रक्चर इज ओके, इंग्लिश एज अ स्ट्रक्चर इज ओके, बट देयर मस्ट बी सम फंक्शन. इसका जो है कोई फंक्शन होना चाहिए. एंड फंक्शन इज एरर फ्री इंग्लिश, मीनिंगफुल इंग्लिश. Now we define functional English is usage of the language, of English language, required to perform a specific function. This is typically taught as a foundation subject when a good command of English is required for academic study and career progression. I have already given you this definition in the notes. जो आज मैंने आपको नोट्स दिया थी इस ग्रुप में, तो आपने देखा होगा कि फंक्शनल इंग्लिश इज यूसेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. यूसेज, इस्तेमाल. रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. दिस इज टिपिकली taught as a foundation subject when a good command of English is required for academic study and career progression. Academic study and career progression. फंक्शनल इंग्लिश का मतलब क्या है कि भाई आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो जाए और आपका करियर जो है वो प्रोग्रेस करे, आप जिंदगी में आगे जाए. सो फॉर दैट वी नीड फंक्शनल इंग्लिश. तो ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम जो है फंक्शनल इंग्लिश को इंक्लूड करेंगे. फोकसिंग एसेंशियली ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश कंप्राइजेस ऑफ द study of how this language is used practically in terms of speaking, writing, listening, and reading. So let our English function.
The main components of functional English are listening, speaking, reading, and writing. Listening activity does not mean just to listen and respond. Speaking, learn to speak by speaking. The two main sub skills of speaking are linguistic skills and communicative skills. कि आपका लिंग्विस्टिक भी हो, लैंग्वेज भी आपको पता हो, ग्रामर का भी पता हो, और आप फिर कम्युनिकेट भी कर सके. So functional English is the total average or overall score across the test components. It requires application to achieve the following scores: 4.5 for IELTS, 32 for TOEFL, IBT. So in different exams, functional English is used, and there is a course score for it, because functional English is usage of the English language required to perform a specific function like academic study or career progression. Functional English provides the essential knowledge, skills, and understanding that will enable the user to operate confidently, effectively, and independently in life and at work. So you will be operating confidently, effectively, independently in life and at work. अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप इस लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं. So functional English provides the basis for effective communication and understanding across the three subject skills are speaking and listening, reading and writing. The study of English can broaden your skills and confidence, allowing you to develop skills that help you to get on in life and work. Now, what are the examples of functional English? Some examples of language functions include describe, explain, discuss, advise, suggest, warn, inform, predict, clarify, apologize, list, compare, contrast, persuade, argue, justify, defend, blame, critique, compliment, recount, retell, narrate, question, request, agree, and disagree. So these are some of the functions of English. For example, I tell you that, do you agree with me? And you tell me, yes, sir, I agree with you because. So that is functional English. If you disagree with me and you give your arguments, that is functional English. You make a mistake and you apologize for that, so that is also functional English. I tell you, okay, narrate your story, and you narrate your story, so that is functional English. You ask a question and you make an interrogative sentence. For example, in grammar, we study interrogative sentence. There is a question. इंटरोगेटिव सवालिया जुमला जो है वो ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है. लेकिन क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या आप क्वेश्चंस बना सकते हैं? अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं और आप क्वेश्चंस करते हैं, सो दैट इज फंक्शनल इंग्लिश. लेकिन अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन मालूम है, एक दो एग्जांपल्स मालूम है, तो वो स्ट्रक्चर है, वो फंक्शन नहीं है. अगर मैं कहता हूं डिस्क्राइब द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इकोनॉमी को डिस्क्राइब करो, सो दिस इज फंक्शनल इंग्लिश. अगर आपको इकोनॉमी का वैसे पता है, स्ट्रक्चर का पता है, लेकिन आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सो दैट इज नॉट फंक्शनल इंग्लिश. सो आई होप यू गॉट द मेन आइडिया ऑफ functional English. I have already given you some notes about functional English. Now the next thing that we have, that is applied grammar. Grammar can refer to the theoretical framework of language as we know it to be or as we determine it should be. We have theoretical grammar, definitions, examples, parts of speech and stuff like that. But when we apply it while writing correct English,
So that is applied grammar. Now, the general meaning of the term grammar is the underlying framework of language, the structure and relationship among words and phrases that make communication possible. Some kind of grammar is necessary for effective speaking and writing. Now, grammar can refer to the theoretical framework of language as we know it to be or as we determine it should be. Applied grammar refers specifically to this structure and framework when it is put into use by actual speakers and writers. So, when we write a paragraph, and we write a paragraph grammatically correct, so that is applied grammar. Reading grammar, definitions of grammar, reading grammar books, that is not applied grammar. Applied grammar instruction differs from traditional grammar teaching in that the primary instructional goal is to accelerate language learning by focusing on the form, function, and meaning of foundational grammar skills that are essential for reading, comprehension, and academic writing. So when we do academic writing, when we answer a question in examination hall, when we write a paragraph, so that is called applied grammar. So in this course, our focus will be on applied grammar and functional English. Our English must functional. For example, today in the morning, I announced my classes and I requested you please read my announcement and then write on my announcement a paragraph, your remarks, your feedback. तो जब मैं डेली आपको क्वेश्चन अपना टॉपिक्स देता हूं तो आप लोगों ने उन टॉपिक्स पे उस लिंक पे लिखना है. Today my topic is functional English and applied grammar. I understand what is functional English, what is applied grammar, and let me write a paragraph on functional English and applied grammar and for your evaluation please. तो जब मैं डेली आपको क्लास अनाउंस करता हूं उस पे कमेंट किया करें कि आज हमारा क्या है. अच्छा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनल इंग्लिश एंड अप्लाइड ग्रामर, that is précis writing. Précis writing, that is applied grammar and that is functional English. ये जो précis है, जब हम précis करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है फंक्शनल इंग्लिश एंड अप्लाइड ग्रामर का. अच्छा, आप लोग हैरान होंगे कि जब मैं कभी कभी फारिग हूँ या थोड़ा सा बोर हूँ या मेरे पास कोई करने का नहीं होता या मैं थोड़ा सा परेशान हूँ तो मैं CSS का 1973 से मेरे ख्याल में है तो 2023 तक जो है प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स पढ़ता हूँ because this is the best collection of functional English and applied grammar. CSS 1973 से 2023 तक जो प्रेसी और RC के पैराग्राफ्स है गूगल में अवेलेबल है, तो जब मैं उनको पढ़ता हूं तो बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है. So that is my reading English. So when I read a précis paragraph, this is based on pure, profound, deep knowledge. जितने भी प्रेसी के पैराग्राफ्स है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, वो बेहतरीन राइटिंग है, द बेस्ट राइटिंग पॉसिबल. तो मैं उसको इंजॉय करता हूं बिकॉज प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एकेडमिक राइटिंग, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डीप डीप नॉलेज. So that is your best reading. And when you make the summary of it, when you make it short, 1/3 summary, so it becomes the best writing practice. बेहतरीन आपने जो है एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें 10 सेंटेंसेस है और आपने 10 सेंटेंसेस को एंजॉय किया, मैसेज को आप समझ गए और इन 10 सेंटेंसेस को अब आपने 3 या 3.5 सेंटेंसेस में डालना है. ठीक है,
तो अगर आप इसको 3 3 9 आपने 10 से 3 सेंटेंसेस बना दिए तो आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और अगर आप पूरी दिन में एक पैराग्राफ भी कर लेते हैं तो रात को आपको नींद, ज़बरदस्त नींद आनी चाहिए। So please, we will start more classes on Prezi. But today, I just wanted to bring it in your kind notice that Prezi writing, Prezi reading, that is functional English and that is applied grammar. And you cannot make grammatical mistake in Prezi. Prezi में आप ग्रामर की गलती नहीं कर सकते. And it is also functional English. So please start making one Prezi per day. In Google it is available and you will be reading the Prezi paragraphs. और एक इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम भी नहीं है, एक पैराग्राफ है, छोटा सा उसको अपने शॉर्ट करना है अपनी लैंग्वेज में, ग्रामर उसमें ठीक हो, फ्लो उसमें हो, तो ये एक ज़बरदस्त राइटिंग एक्सरसाइज भी है और रीडिंग एक्सरसाइज भी है। अगर आपको प्रेसी के पैराग्राफ को समझ आनी शुरू हो गई तो आपको ओरिजिनल बुक्स में मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो प्रेसी एक्सरसाइजेज है ये इन्होंने बड़े बड़े जो है ओरिजिनल चीज़ों से ली है। सो दैट इज़ one of the important area that I would like to recommend to you guys. So this course will be functional English and applied grammar. I will be not wasting your time and energy on remembering definitions and stuff like that, but we will be doing it actually so that you understand how to proceed further. अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अप्लाइड ग्रामर में हम इसको अप्लाई करें और फंक्शनल इंग्लिश फंक्शन करें. सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और write on the economy of Pakistan, or write on what is functional English, or what is applied grammar, or any topic. मैं बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हूँ. अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है या आपको नहीं आते तो किसी भी टॉपिक पे 2-3 सेंटेंसेस लिख के इधर, ताकि हम ग्रामर को अप्लाई करें. कमेंट. यू हैव मैक्सिमम 5 मिनट्स. आपके पास 5 मिनट है तो 2-3 सेंटेंसेस लिखे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की ग्रामर क्या है. और साथ साथ जो है आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं. वो जो क्वेश्चन आप करते हैं दैट इज़ आल्सो अप्लाइड इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन बनाना, सेंटेंस बनाना, डू लिखना, डज लिखना, हैज़ लिखना, हैव लिखना, ठीक है. कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन प्लीज़, सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट. तो जब आप इस तरह की चीज़ लिखते हैं ना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तो ये भी आप ग्रामर को अप्लाई कर रहे हैं, आप फंक्शनल इंग्लिश में आ रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो आप अपनी इंग्लिश को फंक्शनल बना रहे हैं. तो अब्दुल रहीम तरीन साहब, मैंने आपको टॉपिक्स दिए. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट ऑन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज फंक्शनल इंग्लिश, व्हाट इज अप्लाइड ग्रामर, और एनी टॉपिक, माई टीचर, माई मदर, माई फादर, और आस्क अ क्वेश्चन. कुछ लिखे, hurry up. Maximum 5 minutes. Then we wind up this class and we go to the next class. ये क्लास में लिखने से ज़रूरी है कि आप लोगों पे प्रेशर हो कि भाई लोग देखेंगे, सर देख रहा है और जल्दी भी है. तो मैं देखता हूँ कि प्रेशर के अंडर आप कैसे काम करते हैं. Pakistan's economy is going to be worse because IMF gave memorandum instead of giving loan. पाकिस्तान इकोनॉमी. अच्छा, ये जो एपास्ट्रफी है ना, रहमानुल्लाह खान, मैंने आपको पहले बताया था
कि एपॉस्ट्रोफी जो है इसको एकेडमिक राइटिंग में कम इस्तेमाल करें। ऑफ लगाए प्रीपोजिशन, अप्लाइड ग्रामर में ऑफ लगाए। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, economy of Pakistan is going to be worse because IMF gave memorandum instead of giving loan. What do you mean by memorandum? यहां memorandum का आपका क्या मतलब है? Explain it. जब मैं कहता हूं explain, so this is functional English. अब आप memorandum को explain करोगे तो आप function में आ गए और आप ग्रामर को अप्लाई कर रहे हैं। मीनवाइल यू कैन आस्क क्वेश्चंस आल्सो, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन करना भी फंक्शनल इंग्लिश है। हाँ, ओके सर, आई विल यूज प्रीपोजिशंस इंस्टेड ऑफ एपॉस्ट्रोफी, तो ये फंक्शनल ग्रामर है। Water crisis, a real threat for humanity, has become a point of concern for all the nations of the world, and there is a need to conserve our water resources for survival of our generations. अच्छा, फरमानुल्लाह, ये अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो न क्या करे, क्लास के अंदर सेंटेंसेस बनाई, प्रेशर के अंडर। हाँ, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अप्लाइड ग्रामर में और फंक्शनल इंग्लिश में, डोंट यूज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको इस्तेमाल ना करे। स्टॉप, आवर, वी, आई, यू, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ना, इसको आप एकेडमिक राइटिंग में नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये आपकी डायरी नहीं है, ये आपका कोई जाती चक्कर नहीं है, ठीक है? तो बाकी ठीक है, लेकिन आपने, जब मैं कहता हूं लिखो तो फिर क्लास में लिखो, नई सिरे से लिखो, कहीं और से कॉपी पेस्ट ना करे। सर टुडे आई स्टडीड मौलवी। अच्छा, मौलवी का स्पेलिंग तो गरीब को ठीक लिखो ना, MOLVI होता है, मौलवे नहीं होता। तमीज़ुद्दीन केस व्हेन CG गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सो दैट मौलवी तमीज़ुद्दीन चैलेंज दैट इन सिंध। सिंध क्या होता है यार? सिंध नहीं, ये सिंध है। सिंध, एक दफ़ा आपने सिंध लिखा है, एक दफ़ा सिंध लिखा है, ठीक है? तो ये फर्स्ट के पूरा फर्स्ट लिखा करो, FIRST। एकेडमिक राइटिंग में आपने पूरा फर्स्ट लिखना है, ये फर्स्ट नहीं लिखना, ये गलत है। एकेडमिक राइटिंग में आपने स्कॉलरली लिखना है, एक स्कॉलर की तरह लिखना है, चैटिंग आपने नहीं करना। इकोनॉमी, मीर फराज, इकोनॉमी इज द बैक बोन ऑफ एनी कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट डिकेड फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान वाज गुड। ये गुड मोड जो है इससे निकल जाए। मीर फराज गुड को इस्तेमाल न करे, अपनी लैंग्वेज से, विकेबलरी से गुड को निकाले। इसकी जगह के प्लॉजिबल, एक्सेलेंट, एक्सेप्शनली वेल, ग्रेट, इस तरह के एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करें। CSS के लेवल पर आप ये गुड, फाइन, ओके, इस तरह के अल्फाज नहीं लिख सकते, अपने लेवल को बढ़ा दे। रेहाना, फंक्शनल इंग्लिश और अप्लाइड इंग्लिश मीन्स, मुझे नहीं पता कि अप्लाइड इंग्लिश भी कोई है या नहीं है। अप्लाइड ग्रामर होता है, मीन्स प्रैक्टिकल इंग्लिश दैट मीन्स नॉट। अब ये मीन्स रेहाना, मैंने आपको 50 दफ़ा कहा है कि एक लफ्ज़ को 2 दफ़ा मत लिखो। पहले भी अपने मीन्स लिखा, फिर मीन्स लिखा, फिर मीन्स कि और तो आगे तो नहीं लिखा। एंड कमिटिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ड्यूरिंग एकेडेमिक राइटिंग्स, मोर ओवर इट इज़ एबिलिटी टू राइट, डिस्क्राइब, स्पीक। ज़बरदस्त, बाकी ठीक है, लेकिन अपने मीन्स को 2 दफ़ा लिखना है। तो अप्लाइड इंग्लिश में या फंक्शनल इंग्लिश में, अप्लाइड ग्रामर में और फंक्शनल इंग्लिश में आप एक चीज़ को 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, दैट इज़ नॉट अलाउड। Abdul Rahim Tareen, applied grammar refers to the applicability of all the rules of grammar of English for the correct use of English while writing, reading, listening, and talking. It is necessary to be
aware of all the rules of that particular language, and that rules are to be studied in grammar. In short, grammar is the excellent. Abdul Rahim Tareen, very good, loved it, ज़बरदस्त है. नूर बानो, इंग्लिश इज़ lingua franca एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज. यार मतलब एक दफ़ा आपने लिंगुआ फ्रैंका लिखा ना, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज फिर मत लिखो. लिंगुआ फ्रैंका का मतलब ही है इंटरनेशनल लैंग्वेज. देयरफॉर इट इज़ वास्ट. नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि ये वास्ट होगा. बहुत सी लैंग्वेज वास्ट होती है, लेकिन वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस नहीं होती. तो इलॉजिकल बात ना करे. इट कॉल्स फॉर सफिशेंट प्रैक्टिस एंड टाइम टू फाइनली बी एबल टू. अभी फाइनली किसी पहले और आखिर में आपने कामें लगाए हैं, तो ये वो वाला फाइनली नहीं है कि आप सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं. यह आपको बगैर कामे के इसको इस्तेमाल करें. बी एबल टू स्पीक एंड राइट इट करेक्टली नेवरदलेस. अब नेवरदलेस के बाद कामा बनता है क्योंकि ये सेंटेंस के स्टार्ट में है. बाकी ठीक है. ये थैंक यू मैं को मारो गोली, थैंक यू मुझे मत कहो. आपने लिखना है तो कोई अच्छा सा खूबसूरत सेंटेंस बनाओ, क्योंकि थैंक यू पे आपका कमेंट जो है वो ज़ाया हो जाता है. अच्छा सा कोई काम लिखा करो. फंक्शनल इंग्लिश इज ग्रामेटिकल करेक्ट इंग्लिश. मिक खान, मैंने कब आपको ये कहा है, कब मैंने आपको कहा है कि फंक्शनल इंग्लिश इज ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश? ये मैंने नहीं कहा, अपनी तरफ से तुमने बना दिया. ज़रा आज जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो तो पढ़ो. Muhammad Umar Sohail Gujar, the incessant flattering economy. Pakistan has become an enigma to policymakers, but what solution are they trying to find? It is their oblivion that the reasons behind the debacle of Pakistan's economy. They never try to make a holistic. हाँ, बाकी ज़बरदस्त है, लेकिन वो जो मैंने आपको कहा ना कि इसमें आपने ये प्रोनाउंस को इस्तेमाल करना भूल जाए. डोंट यूज प्रोनाउंस, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल करना मुकम्मल छोड़ दे. आई, वी, यू, दे, आवर, हर, दिस, दैट, ये तमाम चीज़ें जो है आप उसको भूल जाए. बाकी ज़बरदस्त है. रहमानुल्लाह खान, आपकी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ इसका कुछ करे. फंक्शनल इंग्लिश डील्स विद, इज डील नहीं होता, डील्स विद. थैंक यू मैंको ख़त्म करो. मुझे आपकी थैंक यू को कोई ज़रूरत नहीं है. आप ज़रा ज़बरदस्त काम करें. अगर आपने थैंक यू कहना ही है तो आप लिखे सर, ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट टू राइट एकेडमिकली and to adopt the rules and regulations of functional English and applied grammar. फिर कोई खूबसूरत जुमला बनाए. ये थैंक यू सारी मारी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. हम क्लास में बैठे हैं, हम कोई ज़ाती गुफ्तगू नहीं कर रहे. Political instability is the byproduct of mismanagement, poor governance and delicate economic conditions. Pakistan since its inception going through all the evils Pakistan since its inception going through all the evils leading to या led to. ये lead आपका गलत है, बाकी ठीक है. to political haphazard. अच्छा, haphazard जो है ये एडजेक्टिव है. ये जो मैं आपको वो कहता ना अप्लाइड ग्रामर, haphazard जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है. आपने इसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया है. So it evils leading to political haphazardness या political chaos. कियास जो है वो नाउन है. कियास क्या है? नाउन. कियाटिक जो है वो एडजेक्टिव है. तो मेहर जुनैद लतीफ़, आई एम इम्प्रेस्ड, एक्सलेंट. आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर राइटिंग वेल, बट प्लीज़ नो कॉपी पेस्ट. कॉपी पेस्ट वाला काम जो है वो व्हाट्सएप में आप करें. व्हाट्सएप में जब आप मुझे एवोल्यूएशन के लिए भेजते हैं तो उधर कॉपी पेस्ट करें, लेकिन बड़ा सा चीज़ भेजें, कोई ऐसे लिखे, कोई पैराग्राफ लिखे. तो कल मैं फिर आपको आगे बताऊंगा कि हम पैराग्राफ कैसे बनाएंगे क्वेश्चंस में और ऐसे में. तो फ़िलहाल ये बहुत है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन. आई एम हैप्पी एंड बिकॉज वी आर अप्लाइंग लैंग्वेज, सो द रिजल्ट्स विल बी excellent.
शर्माना मरमाना छोड़ दे कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, जब आप फेल होंगे तो फिर लोग बहुत कुछ कहेंगे, तो अभी कुछ कहे तो कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट, सी यू नाउ इन पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम।